ये व्हाट्स अप क्या बोलते हैं अपने मापुल लोग. This is your boy Tony Sebastian aka Tony Psycho and we are back again with another episode on Offstage Podcast. Like I told you, this is not your ordinary podcast, ladies and gentlemen. This is by the artist, from the artist to all the people out there. So let me give you a short introduction about our today's guest. He's one of the first graffiti artists to emerge from our country. You can witness his art from Mumbai to all over India and also in international countries. He's inspiring today's generation with not only his art but also through his rap music. Yeah, so ladies and gentlemen, homies and shorties, make some noise for Zake. Yeah, what's up? क्या बोलता है मेरा भाई Zake? क्या बोलते हैं मेरा भाई? How you feeling? I feel good, man. I feel amazing, man. Yo, big ups to you guys for like doing this podcast. Bro, we really appreciate you for taking your time out and coming out to the show. बहुत बहुत शुक्रिया आज टाइम निकल के अपने शो पे आने के लिए. And to start with, we want to start with the evolution of Prathamesh Gurav to Zake. Let's begin it from there. Let's go. Yo, Prathamesh Gurav was like simple boy getting bullied. You know, वैसा वाला vibe था मतलब. You know, I didn't have a voice of my own. You know, and the transformation to Zake is just like, you know, taking the hip hop scene and like motivating myself to get out. You know, like you've done it, bro. Like everybody of us, you know, like we want to get out of where we come from, and you know, the roots still stay, but like you know, it's the evolution that matters after everything. And I think like it inspired me, like hip hop inspired me a lot to fucking take that next step and to taste that fear, you know. And I just had to be not scared. And now I don't think I'm scared of anybody, bro. Like Bro, मेरे को खुद नहीं पता था कि Zake का नाम प्रथमेश गुरव है. मेरे को देख के मैंने जो भी रिसर्च करने का मैंने देखा. And that is why. Otherwise, तो मैं always I have called you by Zake only. Yeah. और Zake का transformation from being a graffiti artist to becoming an illustrator to becoming a rapper to becoming a tattoo artist. Yeah. So overall the years you have developed yourself. बहुत सारा development है और दूसरे arts को भी you have embraced even different arts. Yeah. So like what is the reason that is pushing you to get into more different arts, you know? Bro, I think everything is like one part of me, man. Like everything is it comes from me only. So I just express in different ways. So what I can't rap about or what I can't say draw about, I rap about it, you know. So it's like I can't totally give justice to each and every like medium that I, you know, do like express my art in, but like I try to like say, or you know, it basically completes me, man, as an artist. You know, tattoo is just another medium that I picked up. It's a tool, but like the whole base of it is drawing. So it was easier for me to transition, and so now I just like do everything. You know, I make music, like mostly write rap. I shouldn't say make music because I don't produce, but I make like I write songs and I record them. And then other than that, my life is like tattooing or graffiti, you know, like works hand in hand. But मेरे को ये पूछने का है Zake, but what was the instance that you chose to transform yourself as Zake? कि आज के बाद मेरा एक आइडेंटिफिकेशन ये रहेगा, लोग मेरे को Zake बुलाना चाहिए. और मैं स्टार्टिंग में ये देखता था, you never revealed your identity while doing graffiti. बहुत सारा टाइम था, you used to wear a mask, you used to hide yourself from revealing who you are. कि अगर हम लोग देखते थे ये आर्ट किसने बनाया, हम लोग को वो चेहरा नहीं मालूम था वो आर्ट के पीछे, खाली वो नाम देखते थे हम लोग Zake हर एक जगह में टैग किया है. So like what was it that why didn't you want to reveal yourself? See, when I started doing it, I wanted to be like a superhero, you know, like who goes in the night, does something, and then the next day nobody knows who did it, you know. And so by the time many years passed and वो culture develop हो गया,
और सब लोग मेरे को जानने लगे, you know. Then I was like, everybody is now already knows me because I'm also hanging around within the culture, right? With rappers, with b-boys, and you know, like skateboarders and stuff. So everybody started to slowly just know me, and I was like, yeah, this is the time. Maybe, you know, I should just come and, you know, because I will also grow my opportunities, I know, as a public figure, because I realized soon enough that I'm gonna be like considered and one of the important like, you know, like person in hip hop, you know. So then I was like, maybe I need to, you know, some or the other day everybody's gonna know, because I needed to talk, like the urge to talk, you know, the urge to explain people, like, because when I do it on the street, you basically, I don't have time to talk to you, you know. So then I was like, how am I supposed to give that knowledge, right? The fifth element of hip hop, what everybody misses. So I was like, I need to come in the front and I need to also talk about my life. So when I start to rap, I was like, this is also like talking about my life, right? And yeah, and I saw you guys, like, you know, you Dopatelix, like, you know, all these guys, like Beast Mode, my rapper say Ninja, and all of these guys like really inspired me to like create, you know, because it like your skills rubbed off on me, you know. But when did you finally decide that कि अभी से मैं मेरा identity reveal करूँगा? हाँ, that's when I decided, like, I don't know the specific year and everything, I don't remember all that, but like just after I started feeling that feeling struck me कि I have to like reveal myself, to come in the front of the people, to make them understand like what this is about, you know, what my life is about, you know, how I made it out from where I was, and how I converted this, like everybody draws, but you know, doing graffiti was a little difficult because you have to be in front of everybody doing it, and nobody has any idea why you're doing it, you know. Everybody has different questions, like why the fuck is happening, like what the fuck is happening, you know. So it was very new in India, like how rappers were new to India, like the whole hip hop scene, right? 10 years ago, hardly like there was Way before it was so different कि है ना, मतलब बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा था अपन क्या कर रहा है. लाइक यही चीज़ पे मेरे को पूछने का था कि स्टिल ग्राफिटी, अभी मैं इलिस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, रैपिंग भी समझ सकता हूँ और टैटूइंग भी समझ सकता हूँ कि एक लाइसेंस्ड आर्ट हो गया है, इसके पीछे एक पब्लिक आर गेटिंग पेड फॉर डूइंग ऑल दिस वर्क, बट ग्राफिटी इज स्टिल कंसिडर्ड एज एन फॉर्म ऑफ वैंडलाइजेशन. मतलब आर्ट अच्छा है, ग्राफिटी अच्छा दिखता है, बट कुछ लोग को वो पसंद नहीं आता है कि मेरे दरवाजे पे, मेरे दीवार पे आके इन लोग ने ये क्यों करके जा रहे हैं, उन लोग क्या करना चाहते हैं, उन लोग फिर उसको हटा देते, फिर से तुम लोग जाके बनाते हो. तो तेरे को लगता है अभी भी सोसाइटी में किधर ऐसा है कि ग्राफिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है एज अ स्ट्रीट आर्ट और समथिंग? हाँ, नहीं मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी तो थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ गया है. अभी बट स्पेस नहीं रहता है इधर, समझ रहा है. बॉम्बे ऐसा जगह है, या इंडिया ही ऐसा जगह है कि वैंडलाइजेशन सिर्फ हम लोग नहीं करते, सब लोग कर रहे हैं. मतलब जो पोस्टर लगा रहा है मूवीज़ के वो भी कर रहा है, समझ रहा है. जो तो ये सब भी वैंडलाइजिंग है. जो एड्स बना रहा है, कंटिन्यूस अपन एड्स देख रहे हैं, अपने को थोड़ी कंज्यूम करना है वो एड्स, समझ रहे हो. अपन थोड़ी पूछ रहे हैं उनको कि मतलब वो देने के लिए, लाइक तुमको नहीं देखना है ना, मिक्सर ही बेच रहे, समझ रहा है. ट्रेन से जा रहा हो तो वही दिख रहा है, बस के पैनल पे भी वही लगा है, ट्रेन के पैनल पे भी वही लगा है. तो इट एट अ पॉइंट वो इरिटेटिंग हो जाता है. तो आर्ट एक ऐसा, मतलब इट्स लाइक यू प्लेड अ सॉन्ग, यू नो, इन द मिडल ऑफ ट्रैफिक, यू नो, लाइक वैसा. मतलब तेरे को पीसफुल लगता है, तेरे को लगता है जो भी है, पर तेरे को एक फीलिंग आता है. इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट यू कैन इग्नोर, यू नो. और मेरे को फटे हिम्मत करना पड़ा कि जाके करने में, ताकि पब्लिक को भी थोड़ा, यू नो, समझ. ऐसा कभी सीन हो गया लेकिन करने का टाइम पुलिस ने जमा कर दिए ले, वरना पब्लिक ने कुछ जमा करा के दे दिया? हाँ, नहीं, पब्लिक तो ऐसा नहीं की है मेरे साथ तो, बट पुलिस पीछे पड़ी है बहुत टाइम. और मेरे को लगता है, मेरे को याद है एक
ग्राफिटी गैंग करके एक ये आर्टिकल आया था जिसमें शायद से लॉबस्टर का नाम भी था, तेरा नाम भी था, कि कौन है ये लड़के लोग ट्रेन को वैंडलाइज कर रहे, ट्रेन में ग्राफिटी बना रहे और इन लोग गायब हो जा रहे, और कुछ प्राइस मनी भी था शायद से तुम लोग को पकड़ने के ऊपर, क्या फाइन भी था तुम लोग को? पता नहीं भाई, नो कमेंट. No bro, if you want to put some light on it, then No, I you mean, can see, go like probably. there is always like this whole illegal factor, and that's the essence of, you know, graffiti. So you never know, like, you know, things happen, and like recently also there was a case of like misjudgment, you know, by the cops, where they thought it was me and they came to me, but like I don't do like illegal anymore, you know. Bro, when मैं जब हिप हॉप में आया, मेरे को पता है एक बी बॉइंग कम्युनिटी है, मेरे को पता है एक रैप कम्युनिटी है, मतलब उसके अपन बिलोंग करते ये हो, बट मेरे को ये भी पता था कि हिप हॉप के ये खाली दो नहीं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, डीजेइंग है, बीट बॉक्सिंग है, ग्राफिटी है. पर मैं जब भी ग्राफिटी आर्टिस्ट लोग को ढूंढता था, खाली मेरे को जब भी ट्रेन में ट्रैवल करता था एक नाम दिखता था, ज़ेक. किधर गोरेगांव के इधर भी दिख रहा हूँ ज़ेक, किधर माइम में देख रहा हूँ ज़ेक, चर्च गेट में देख रहा हूँ ज़ेक. कभी मेरे को मालूम नहीं ये ज़ेक कौन है, बट मेरे को ये पता है ये बंदा ग्राफिटी कर रहा है और ये ग्राफिटी आर्टिस्ट है. और मैं तभी तक मिला नहीं हूँ ज़ेक को. लेकिन अपन मिलते, अपन किधर मिलते, कैसा मिलते, मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये बंदा ज़ेक कौन है. और फिर आगे तुम बताओगे कि अपन मिले कैसे. Okay, we have to speak about this. Okay. अपन मिले किधर, कैसा मिले, क्या हुआ? अरे तो एक बहुत ही खतरनाक सीन है, मतलब टोनी और मैं ऐसा मिले कि मतलब एक दूसरे बारे में सुना है हम लोग ने, सब कुछ हुआ है, और जो भी है, तभी इंस्टाग्राम भी नहीं था, तो मतलब तुमने सुना है तो मतलब तुमने सुना है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ जाके देखा है या कोई, पता नहीं, अपने रिस्पेक्ट है, मतलब सच्ची का रिस्पेक्ट रहता था तभी. तो अपने को पता है कि ये सब ये गैंग है अपना, जो मतलब समझ रहा है रावस है मतलब अपने सीन में, और मेरे को मिलना है. और मैं गोवा में था और बहुत और कुछ नहीं, मतलब मैं थोड़ा हाई था, और क्योंकि गोवा था ऑफ कोर्स, तो बट कुछ ज़्यादा ही शायद मैं हाई था. और फिर ऐसा हुआ कि मेरे को ना एक पार्टी में ऐसा लगा कि स्नूप डॉग मेरे को दिख गया और मेरे तरफ चल के आ रहा है, और वो चल के आ रहा है, और मेरे को सच में मतलब लगा कि फक, ये तो स्नूप डॉग ही है. और उसने मेरे को बोला, यो ज़ेक, आई एम बिगेस्ट फैन. और मैं बोला, ओह शिट, टिल डेट इट्स लाइक आई एम स्टोनी फ्रॉम साइको. And I'm like, oh shit, bro. मतलब it was just a funny scene because you know, I hadn't seen him, but like same here. जो confidence है, मतलब ये चल के भी आया और एकदम मतलब स्नूप डॉगी डॉग दिख रहा था. तो यार dude, अभी मैंने एक्चुअली फर्स्ट पोर्ट्रेट जो रैपर का बनाया ना, वो टोनी का बनाया ब्रो. रिस्पेक्ट टू दैट. और मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं एक बॉम्बे का बंदे को, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, बहुत दिन से सोच रहा हूँ इसको कभी मिलूंगा, कैसा मिलूंगा, और वो मेरे को दिख जाता है एक पार्टी में गोवा में, और वो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था, और वो मीट कभी भूल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था. अपन मिले थे, फिर उसके बाद पार्टी वीटी किया, तो मतलब वो मेमोरी ऑलवेज स्टक टू मी, बिकॉज यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू बी मीट यू, एंड I've been always a fan till date. I am a fan of your work that you do. And it was it was amazing because it wasn't a hip hop party, so you know, it was a random party, like yeah, it was just a random party. Yeah, so it was very weird for me to see him walk inside, and then I'm like, oh shit, you know. It wasn't our meet was unexpected. Very unexpected. But so I think from there till now we have been a good friends, and we have been stuck to the community, and we are doing so much lot of things. But अभी मेरे को लगता है Zake, पहला you were the first one to start the graffiti evolution in our country.
एंड एवरीथिंग, बट अभी बहुत लोग आगे ग्राफिटी कर रहे हैं, अभी बहुत नए नए लोग भी आ रहे हैं, ग्राफिटी कर रहा है. एंड हाउ डज यू हाउ डू यू फील व्हेन तेरा ग्राफिटी के ऊपर कोई दूसरा ग्राफिटी आर्टिस्ट आके बॉम्ब बिम कर दिया है, खराब कर दिया है और चल दिया है, तो तेरे को कैसा लगता है वो फीलिंग? देख मेरे ऊपर तो नहीं करता है वहाँ, मतलब उतना तो उनको समझता है, बट अगर मेरे को पता चला तो फिर तो शॉर्ट है, पर अगर नहीं पता चला तो फिर मतलब पता नहीं, मतलब हेटर्स रहते हैं ब्रो. मेरा रिएक्शन ऐसा रहता है कि इन लोग अभी चालू कर रहे हैं और समझ रहे हैं, सब लोग सब पे हेट करते हैं ब्रो, यू नो, जब अभी चालू करते हैं और उनको लगता है मेरे को बनने का, मतलब क्यों उन लोगों क्योंकि उन लोग सबको किंग बनने का है ब्रो, समझ रहा है. ओके. एक टाइम पे जेक पूरा मैंने ऑल सिटी किया है, मतलब एक दो बार, मतलब मैंने पूरा सिटी में टैग किया है, उसके वजह से मेरा टैग देखा है सब लोग ने, यू नो, तो उससे रिस्पेक्ट बढ़ रहा है मतलब कल्चर में कि द मोर यू टैग द मोर यू डू स्टफ, यू नो. तो अगर मैंने किया है तो किसी और को अगर करना हो तो I mean he also can do next to me, but like मतलब हाँ, it's an easy way, it's like dissing bro. There is a lot of different walls are available, different places available. Easy city है about diss करने वाला shot है, समझ रहा है. So how do you respond to that? You go make another graffiti No. on top of that to... The thing is that it's because it's a very small culture, right? Nobody entertains fake ass people, you know, like ऐसा मतलब टाइट कम्युनिटी हम लोग का, तो ऐसा मतलब उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा, ऐसा कुछ शॉर्ट रहेगा तो यू नो, लाइक रिस्पेक्ट के ऊपर है पूरा गेम, यू नो, ऐसा कोई भी आके नहीं कर सकता. You have to follow certain rules. You can't fuck up somebody else's. Like I have kept strict rules where you don't go like cars and stuff. You know, that's not our work. You know, अपने को we don't want to piss the people off. हम लोग को क्या मिलेगा पब्लिक को पिस करके, you know? It's just against the law. You know, it's like we have a thing. तो ना लाइक wherever we stand, समझ रहा है, अपने को कोई ना कोई आके बोलता है इधर क्यों खड़े हैं तुम लोग, बराबर की नहीं, बिकॉज जस्ट वी ड्रेस और सम यू नो वी लुक डिफरेंट और वट एवर द रीजन इज, बट वी आर ऑलवेज आस्क्ड, बराबर. एवरी फकिंग इंच ऑफ दिस सिटी इज ओन्ड बाय फकिंग समवन. वी डोंट हैव एनी वन प्लेस वेयर वी कैन डू एनीथिंग ब्रो, समझ रहा है. तो अगर मेरे को आर्ट करने है तो मेरे को इलीगली ही करना पड़ेगा ना, मैं किधर करूँ, समझ रहा है, मेरे पास जगह ही नहीं करने के लिए. प्लस दे वांट आर्ट, द गवर्नमेंट वांट्स आर्ट, दे आर डूइंग ऑल दिस आर्ट स्टफ, बट लाइक देयर इज़ नो डिग्री टू इट, देयर इज़ नो ऑथेंटिसिटी टू इट, समझ रहा है. इट्स नॉट गिवन टू पीपल हु deserve it, you know. There are people like there are my boys who are doing it since a long time. उन लोग क्वालिटी आर्ट नहीं करते, उन लोग कुछ भी कराते हैं. तो हम लोग को तो मतलब स्ट्रगल ही करना है ब्रो, लाइक आई हैव टू फाइंड वॉल्स एंड डू इट, either take permission or either like some, but like I would say there is trouble in on the trains and all. मतलब मैं ट्रेन्स पे कर रहा हूँ तो कुछ कोई सब like it's almost government का property. Government, हाँ, and it's a big thing, but like वॉल्स पे आई डोंट थिंक प्रॉब्लम हुआ है, मतलब कॉप ने इतना कभी प्रॉब्लम, उन लोग आके रुके. इनफैक्ट कॉप ने हम लोग को अच्छा भी ट्रीट किया, एक टाइम समोसा वमोसा भी ला के दिया है ब्रो, समझ रहे हैं, मतलब दे तो तुम लोग ग्राफिटी करने का है? हम लोग सिर्फ ग्राफिटी कर रहे थे, उन लोग उधर मतलब ऑफ ड्यूटी थे और चिल कर रहे थे, तो दे ट्रीटेड अस वेरी वेल एंड ऑल, you know. So there was one cop who got into a quarrel with me ki it is illegal and everything, but all the other cops were like this is painting you know, so painting cannot be illegal, like they're just painting, you know. So he was just trying to whatever like fight with me for no reason. So but वही है, मतलब everybody understands that it's just painting man, like ऐसा थोड़ी है कि जाके मतलब अपन किसी का कुछ हार्म नहीं पहुंचा रहे, राइट, लाइक एंड not that we are selling drugs or something, you know, we're just painting. So before I used to paint in the night because it was very difficult for me to have that confidence to paint in the day. Plus I was like कोई देखे और कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँ, और आज तक मतलब सवाल रहता है सबको ही
कि तुम लोग क्यों कर रहे हो ये कि इधर? क्यों करे, और वैसा मतलब जो भी है मतलब, और कैसे करे वो भी रहता ना कि हाउ डू आई डू इट, इफ आई वांट टू इवन डू इट, हाउ डू आई डू इट. तो it's just that you go and you do it and then you experience in reality like what happens. And I was not good at talking to people, you know. Graffiti made me like thoda, you know, because every day if you're going on the street to paint, like you are coming across so many people, you know, and they are asking you always कि कैस क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन से कंपनी से, कौन तुमको पैसा दे रहा है. पर अपन ने सब कुछ मतलब बचा बचा के किया है सब कुछ. मतलब मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे भाई, लाइक सच बता रहा हूँ. मतलब बहुत टाइम से मैं जमा करके एक ना एक बट दैट्स व्हाट, लाइक एवरीथिंग दैट आई डिड, आई ट्राइड माई बेस्ट, यू नो. Okay. It's like you guys, you know, like every time you drop a song, it has to be a banger. So that if you keep that mentality, I think, you know, I reached a point now where I don't have to worry about anything, you know, my cans, because cans are the most the first basic supply. सबको चाहिए रहता है बराबर. Yeah, of course, cans के बिना तो वही it's not possible. हाँ, it's not like it's not possible, it's just that it's better with cans, you know. जो कर सकते हैं वो बहुत फास्ट होता है, और तो वो सबको टाइम लगता है ब्रो. इट हैज़ टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, यू नो. तो तेरे को क्या लगता है ऐसे कि इन फ्यूचर ग्राफिटी आर्ट को पब्लिक लीगल करेगा, जस्ट लाइक हाउ स्ट्रीट आर्ट इज कम नाउ? स्ट्रीट आर्ट अपन देख रहे बहुत सारा, मेरे एरिया में भी बहुत सारा बिल्डिंग्स उन लोग ने पेंट किया, और बहुत सारे वर्ली में भी उन लोग ने बहुत सारा ऐसा स्ट्रीट आर्ट के नाम पे इन लोग पेंट कर रहे हैं, और इसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है, गवर्नमेंट भी ऐसा कर रहा है. तो लेकिन ग्राफिटी को अभी भी तेरे को क्यों लगता है ऐसा ऑपोजिशन है, और क्या तेरे को लगता है लीगल होएगा पब्लिक? देख, क्योंकि है ना ग्राफिटी है ना ब्रोस, पब्लिक से आता है जो मतलब मार्जिनलाइज्ड है, समझ रहा है, और जो मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं या जो भी है, समझ रहा है, अपने जैसे लोग स्लम से आते हैं, समझ रहा है. ग्राफिटी उधर से आता है ब्रो. इन लोग ला रहे वाइट पब्लिक को, समझ रहा है, इधर इंडिया में, और फटे बड़ा बड़ा पेंट करा रहे हैं. पर उन लोगों ने हम लोगों को कभी ऐसा मौका नहीं दिया है. ज़्यादा से ज़्यादा एक वॉल दिया होगा, बट हम लोग को कभी ऐसा बड़ा वॉल नहीं दिया. उन लोग मेरे को तो नहीं दिया है वहाँ करने के लिए, समझ रहा है. बड़ा कैनवस, यू नो, बिकॉज दे हैव देयर ओन like set of shit, you know, how they judge, like they have a whole different set of eyes how they judge. But graffiti is like a very solid expression, you know, like everybody, it's not like my work is shit, right? Because my work is good, everybody fucking loves it. But I see where the, you know, the difference lies, you know. मैं देख रहा हूँ कि इन लोग कैसा जज करते हैं, यू नो. मतलब रैप को भी मतलब कितना रिस्पेक्ट था ब्रो पहले. अभी जस्ट बिकॉज इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर एंड इट्स कमिंग ऑन टीवी एंड स्टफ, इट्स बिकमिंग लाइक कि हाँ अभी रिस्पेक्ट करने लगे, समझ रहा है. नहीं तो अपने को तो छपरी बोलते थे सब लोग. अपने को क्या, अपने को, यू नो, दे यूज्ड टू डाउनग्रेड अस, दे यूज्ड टू जज अस लाइक दैट. सो आई फील इट्स ओके. I mean, I'm going to Indonesia, bro, on 23rd of May now, or representing India again in a graffiti festival outside, and this is my third time representing India. So I don't really care. I am more into the worldwide community, bro, of graffiti, you know. मैं बहुत सोचता था इंडिया में क्या हो रहा है, बट मैं अभी सोचना बंद कर दिया हूँ. मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरा आर्ट, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास आर्ट इतना करने के लिए सब कुछ है कि आई डोंट वांट टू वरी अबाउट दिस, बिकॉज आई रियलाइज वन थिंग कि इफ़ आई डू गुड, you know, if I get that validation from outside, now these people are gonna lick my balls, you know, like soon enough, you know. वैसा if I go international, if I start doing things, they'll be like हाँ. So I don't need to show anybody anything, I just need to do what I need to do, you know. As we were saying कि starting में बहुत struggle था, like even for getting cans and to express your art and everything, but I would like to ask you, तेरा पहला पेमेंट क्या था जो तू बनाया था ग्राफिटी आर्ट के थ्रू? याद है?
पहला मतलब लिटरली यू गॉट पेड फॉर दैट गिग, मतलब Yeah. ग्राफिटी करने के लिए यू लिटरली गॉट पेड फॉर योर आर्ट. मेरा पहला पेमेंट बनता है 10,000 रुपया रहेगा, 10,000 या 5,000 ऐसा कुछ. नहीं पहला पेमेंट तो खाना था बा. पहला पेमेंट सिर्फ खाना था. एक बंदे के उसमें गए थे हम लोग रिजॉर्ट में पेंट करने के लिए, और उसने हम लोगों से स्केट पार्क था उधर, तो वो पेंट किया हम लोगों ने और थोड़ा बहुत इधर उधर किया. उसने बोला खाना पीना और मतलब मिसलेनियस मिलेगा, समझ रहा है कुछ ना. तो लाइक ओके यू नो लाइक आई डोंट माइंड. और पर वो सही स्पेशल दिन था क्योंकि तभी मैं मेरे एक दोस्त से मिला रवि, और वो गिग के बाद ही मैं मतलब मेरा जब ही हुआ उसके बाद मैं गया सांता क्रूज, और उधर मैं जर्मन लोग को मिला जिससे मतलब मैं जर्मनी गया आफ्टर 6 months यू नो. सो इट वाज अ वेरी नाइस डे फॉर मी. लाइक ऐसा लग रहा था कि मतलब सब कुछ मेरे पास आ रहा है यू नो, और अपने आप हो रहा है मतलब. I want to talk about that thing. As you told, as you spoke about Germany, you were the first graffiti artist to represent our country in Brazil, Spain and Germany and all these places. तो तेरे को क्या लगता है क्या डिफरेंस है, उधर लोग जैसा एक्सेप्ट कर रहे ग्राफिटी को इधर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर ब्रो रहे? उधर है ना मतलब 25 साल ओल्ड मतलब आर्टिस्ट थे, और मतलब उन लोग का अभी मेरे को सिर्फ 10 साल हुआ है. अभी के टाइम पे उधर मतलब 40-50 साल के आर्टिस्ट हैं, मतलब उतना टाइम से कर रहे हैं उन लोग. तो इट्स जस्ट दैट कि बहुत पुराना है कल्चर, बहुत टाइम से. तो एवरीबडी नोज इट एंड एवरीबडी नोज दैट देयर इज अ वे टू, एंड इट्स जस्ट फॉरवर्ड यू नो. इट्स जस्ट बट इंटरनेट की वजह से अभी सब कुछ फॉरवर्ड हो गया है. तो मेरे को लग रहा है इंडिया थोड़ा ऐसा आगे पीछे चल रहा है, बिकॉज ऐसा ग्रेजुअली अपन ग्रो नहीं हुए, अपने को सब कुछ एक साथ मिल गया है ब्रो. समझ रहा है तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी गॉट द स्प्रे कैंस. लाइक पहले जब ये ग्राफिटी स्टार्ट हुआ था ब्रॉन्क्स वॉन्क्स में, तो भी नल्ले कैंस थे और सब कुछ एकदम इट वॉज लाइक हाई क्वालिटी, एवरीथिंग वॉज कमिंग, सब कुछ मतलब काम चलाओ था बेसिकली. अभी अपने को एकदम तो सबसे बेस्ट आइटम मिलता है इंडिया में होके भी मतलब. और कल्चर सिर्फ थोड़ा लेट आया अपने इधर यू नो, पीपल आर फॉलोइंग इट लेट यू नो. स्ट्रीट वेयर भी पहले उधर आया इधर है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस हाउ आई व्हेन आई गो देयर एंड आई सी द क्वालिटी एंड आई सी हाउ दे वर्क इज there's a massive difference you know, because udhar at least 60% 70% I think they also don't have religion bro, which is I think a very good thing there, because they then have culture you know. So nobody they have religion like Christianity and all, but nobody really like is so extremely following there you know, like how people follow here. So udhar matlab hip hop hi hai bro mostly you know, आगे especially Brazil, Germany में तो I have seen like so many like people in the hip hop scene, and I have seen them doing like shows and making a lot of money on the street. Or I think India doesn't give us that you know, we can't do street shows you know, it's kind of illegal to here to do street shows and stuff. So तो वो सब वो सब कल्चर में देखने मिला मेरे को यू नो, कि कैसा इन लोग का मतलब सही चलता है यार इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. उन लोग कैसा इंडियंस को एक्सेप्ट करते हैं कि अभी ये फील्ड में इंडियंस भी आ गए हैं जो ग्राफिटी कर रहे हैं. तो हाउ इज द एक्सेप्टेंस ओवर देयर इन अदर कंट्रीज फॉर इंडियन ग्राफिटी आर्टिस्ट? It's good. I mean, when I went as a kid, obviously they like I had no experience and stuff, so they did try to make a fun of me, you know, as white people how they are. But like now I mean like I have exceeded like my like you know my work and the way I do it, and I can pull off anything bro. And so yeah, but when I went to Brazil, it was nice. It was really nice. They respect, because still Brazilians look like you and stuff you know. When I went to Germany, it was a little you know racist I would say, but I didn't give a fuck. I did my thing. But like that is the way you should be bro. Yeah. But like it is what it is you know, I'm Yeah. just speaking the truth. So but it was cool.
it was really cool to meet the artists. My artists were nice. You know, other people were bullshit, but like some of the artists that I met were really nice. You know, and they have a very tight community as well, so they give a lot of love, and you know, just like teaching wise also they give a lot of knowledge. Yeah. क्योंकि उन लोग सब बहुत टाइम से कर रहे हैं और समझ रहा है, मतलब तू वही का एनवायरनमेंट में एनी टाइम तू वही कर रहा है ब्रो. लाइक आफ्टर यू केम बैक आफ्टर योर ट्रिप और तेरे को बुलाया था TEDx टॉक्स में, where you had to go be a representative of the graffiti community and you had to speak to a lot of people who didn't know much about graffiti art and everything and the culture behind it. So how difficult was it for you to convince the audience who don't know about anything about graffiti in I our mean, own it was country? difficult for me to even talk at TEDx, you know. It's like, yeah, like this is a true story. Like on the day of the rehearsal, I was like, I can't do this shit. And they were like, yo. And so yeah, it was difficult, man, because I am a graffiti artist, right? I like painting. I was coming in front of the camera and stuff, but it wasn't more like talking and और नहीं हो रहा था मेरे से, तो मैंने बोला नहीं होएगा मेरे से, you know. तो मैं खुद को ही कन्विंस करके वो कैसा किया मेरे को पता है, बट it's more about कि I just put out my story, you know. मैंने जो सच था वो सारा बोल दिया. मैंने उधर कुछ रखा नहीं मेरे दिल में, मैंने बोल दिया, बोला कि जो होएगा होएगा, you know. I don't want to leave you with like a moral. I just want to tell you what I did, so you find the moral within my story. But people responded well after I was done. They came and told me your story was really unique, we really loved it, this, that, so yeah, it's a good, and it was a good opportunity, man. TEDx is a very good platform, you know. So yeah, whatever. See, now I see घर पे भी एक्सेप्ट करने लग गया है जो तू कर रहा है. स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स एक ऑब्जेक्शन तो रहेगा, जैसे ही मतलब हिप हॉप में जा रहे हैं अपन, ये करने का है वो करने का है, तो पेरेंट्स को एक क्वेश्चन रहता ही है कि आर यू गोइंग टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट. दैट इज द वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन एवरी पेरेंट हैज व्हेन वी वांट टू डू समथिंग. Is it gonna make money or is it gonna be a career doing this and everything? But now I see there's a lot of brands approached you and they want to like collaborate with you. They want to do the art. They want to take your art and represent it on a bigger scale and everything. So मतलब अभी कैसा फील होता है जब भी इतना सारा ब्रांड्स आ रहे हैं तेरे पास और तेरे को उन लोग के साथ काम करने के लिए कैसा लग रहा है? अभी तो मतलब it's become much more easier now. And पहले तो ऐसा full tension आता था मेरे को, क्योंकि just working with such a big brand, you like मेरे को ऐसा लगता है क्या ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को, क्या because they have a lot of guidelines कि ऐसा करना है वैसा करना है, you know what I mean. पर अभी बहुत easily मेरे क्रैक हो जाता है, and you know it feels really nice that I am getting constant work now, you know, because at that time I didn't expect. By the time I was in college, because I started when I was in college, so by the time I was passing out of college, I already knew कि fuck, I can do shit, you know, I can make a career in graffiti. तो मैंने कभी ऑफिस ही नहीं ज्वाइन किया ब्रो, मैं कभी गया ही नहीं, मैंने कभी कॉलेज के बाद गया ही नहीं ब्रो, मतलब समझ रहा है. मैंने सीधा रिस्क लिया, मैंने बोला नहीं जाऊँगा ऑफिस में, कि यही करूँगा, होएगा जो होएगा. तो थोड़ा बहुत लात का, बट लाइक नाउ इट्स अ टाइम एंड लाइक कॉन्स्टेंटली देयर इज वर्क, एंड लाइक I am coming up with new stuff, you know, all the time. So, and hip hop is also growing, so you know it's a blessing, man. So लेकिन बट ग्राफिटी से ये आइडिया कैसा आया कि मेरे को ये चीज़, ये आर्ट को अभी मेरे को टैटूइंग में भी करने का है? बिकॉज टैटूइंग केम टू इंडिया बिफोर ग्राफिटी. टैटूइंग बहुत टाइम से, मतलब वो एंशियंट टाइम से ही है. लेकिन अभी उसके बाद ग्राफिटी आया, और तेरे को कभी लगा कि भाई मैं अभी मेरे को ये जो आर्ट है मेरे को टैटूइंग में लेके आने का है? देखते हो सच, एंड इट्स क्वाइट डिफरेंट बिकॉज देयर इट्स द स्प्रे कैन
Yeah, and here needle. it's a machine with a needle. Yeah. If you put too much pressure, the blood is going to come out. It's So not the like scraping wall. मेरे को हमेशा टैटू आर्टिस्ट ही बनने का था Okay. तो बट फिर पैसा नहीं था यार, और ऐसा लगता था कि मैं किसी के हाथ में घुसाऊंगा और कुछ हो गया तो फिर क्या शॉट है, मतलब मैं डर जाता था, बोले ये क्या है, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है एंड ऐसा वैसा। फिर हिप हॉप में आने के बाद मेरे को ग्राफिटी मिला तो मैंने टैटू के बारे में छोड़ दिया सोचना। फिर सब लोग मेरे को बोला फिर तू टैटू कर, मैं सुनते आया फुल टाइम। फिर उसके बाद एक टाइम बाद मैं बोला चल करते लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में मेरे को ऐसा लगा, उसके पहले मैंने चालू कर दिया था बट फिर लॉकडाउन में मेरे को ऐसा लगा कि इट्स नॉट बैड, बिकॉज एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन में ऑलमोस्ट लाइक एवरीबडी वाज गोइंग ब्रोक एंड दिस एंड दैट राइट, and I was like I want to go to Goa and I was broke, right? I was like fuck, if I spend any more money I'm gonna go like fucking zero. So then I had to travel or do something, and I couldn't wait in Bombay, I was stuck in a house. तो मैं गोवा जा रहा था और मैं गोवा गया और लिटरली ऐसा हुआ कि मेरा पैसा ख़त्म होने वाला था और मेरे को 3-4 टैटूज मिले और मैं बोला फक, दिस हैज़ पावर, लाइक I can survive anywhere if I can fucking tattoo, मेरे को किसी के पास मतलब जाने की, I don't have to wait for one wall to come, I can tattoo फटाफट आ जाता है। तो it was nice and everybody wants to get tattooed from me, so then I was like okay, let's do it। मेरे को लगता है जब भी तू स्टक हो जाता है उधर से तेरे को कुछ तू क्रिएट करने लग जाता है। लास्ट टाइम भी मतलब जब भी अपन बात किए थे, जब भी वो फ्लड के बारे में तूने बताया था, यू गॉट स्टक इन द फ्लड एंड एवरीथिंग, फिर देन उसके बाद you were continuously drawing for the next couple of days and then you started doing graffiti from there, but then again corona came, then you got stuck and then you started this tattooing thing. But the next question is, when are you getting my tattoo done? Let's go, there's man. A lot of canvas for you. Let's go Bro, waiting for that. I want a Zake customized tattoo on me because I've done a lot of tattoos from a lot of artists, but this would be the first tattoo that I will be doing man. from a graffiti artist. Because this is not a graffiti which is going to be bombed by someone else or taken down by the society or government. This is going to be there forever. So of course I want to get a it's an honor, like for sure we have to do that. So moving on to the next thing, so what made you, apart from tattooing and graffiti and everything, this is totally related to your art that you do, but all of a sudden we get to hear that Zake is now a rapper. So how did that come to your mind that okay, I used to write Tony, like from a long time, like when I started also I used to rap only, but write, and just do it for myself. And I was I've heard your graffiti rap, bro. Yeah, correct. Come on. So that was when 2014 when Manmeet Kaur had launched, and I just made her listen and she was like chal, like my album is coming, you do one song. So I was like okay. I jumped on the mic and I really respect that she gave me a chance to do it, and then I did one track and her album was really nice, and then I just left it because I was like, I don't know, maybe I can't do it, I don't have that much confidence, and so it took me all these years to gain that confidence, and I'm like fuck this shit, let's but now I'm seeing कि back to back गाने आते जा रहे, यंग नॉस के साथ, यंग फ्लाई तो इन लोग है ना ब्रो, मेरा मतलब समझ रहे हैं, इन लोग फ्यूल है यार, इन लोग जैसा एनर्जी रहेगा ना, अगर नॉस और आरएफ और इन लोग समझ रहे इडा ये वो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि फक, क्योंकि इन लोग ने भी चालू किया बराबर, इवन नॉस स्टार्टेड एट अ सिमिलर टाइम and then even RF started at a similar time, so and we have been together, we have long history, we all have together, so मैंने बोला चल तुम लोग कर रहे हैं ना चालू, मैं भी करेगा, because I can see the fucking fear, I think that guts in them, and rage was there from inside you from a long time, and then I was like, if it's gonna happen, let's do it, and then when I did it I realized ki it's getting better, so I don't want to stop now because it doesn't feel like I should stop, so
It's just about time and See, there is a saying called like the jack of all trade is master to none. So, do you think like when you go into a lot of things, you don't become a master of a single art, or do you think you need to explore No, with see, I different will tell arts you. that you doing? To become a master, you need 10,000 hours, bro. And 10,000 hours is not a lot of time, bro. So it's not like, and what I'm doing is not different from each other. It's just an incomplete expression. Say for example, if I am a movie maker, I'm also thinking about how the movie is gonna look, the video part of it, and how the movie is going. What are you gonna say, the story part of it, right? Like generally, I'm just saying, okay. So it's like the same for me. I'm also writing and I'm drawing. I'm doing the visual, but the visual is actually the writing part. So it's like I'm writing a brief to what I'm basically drawing. तो एक ही है भाई, it's not different. It's just the way I do it. It's just about how I go on the mic, and that's all practice, right? I feel art is from within. All this can be acquired through practice, like how to say it out. But like nobody can make you sit and write down your raps, right? You have to feel to write down. Yeah. You have to do it yourself. Like you can't, कोई तेरे को सिखा नहीं सकता. स्पिट विट करना भी तू सीखेगा, पर तेरे को सिखा सकते, तेरे को बोल सकता है, पर राइटिंग नहीं सिखा सकता है ब्रो. राइटिंग बहुत अंदर से आता है, क्योंकि जैसा तू बात करता है, इट्स वेरी पर्सनल टू यू, एंड इवन द वे यू से इट इज़ वेरी पर्सनल टू यू, राइट? It's not like any school can teach you. So it's like, it's just an incomplete expression of me that is getting complete, and I don't think it's different from each other. It's just like breathing for me now. It's like I'm drawing, and at the same time I'm doing some freestyle writing, some rap, like just randomly just writing some rap. मेरे को लगता है तेरा एक्सपीरियंस तू ही बता सकता है. हाँ. ना तो दूसरे को रख के लिख सकता है, ना दूसरा तेरे लिए आके तेरा एक्सपीरियंस क्या है सुन के वो बता सकता है एग्जैक्टली क्या है. बट सी आई हैव सीन अभी रैप में भी बहुत सारा कोलैबोरेशंस वी हैव डन. सो are you planning to drop any single or anything? That is that's the reason why I'm doing collaborations, because I get to learn a lot, and people have been so nice and welcoming to make me a part of that track. So then I'm like, yo, this is like learning for me right now, So my EP is getting ready, It's I have decided the name, but I'm not so sure, so I'm not going to put it out. But in the EP, something different is going to come, is where my role as an artist, comes in picture, where the artwork for it, I'm going to make it, and I'm also going to do like a 3D model of it, and it's a big plan. It's like I'm basically trying to establish this character called Lil Z. Lil Z is like it's like a little version of me, because my character look like kids, and it reminds me of the kid that I started like back then. So it's that character doing things, So whatever the song title and song tracks will be, everything what will be, because I don't, for me now, I'm writing as what I've been through since I've been born, बराबर, मतलब क्योंकि मेरा तो पहले से निकल रहा है ना, it's not like अभी का निकल रहा है कुछ, प्रेजेंट का और पिछले टाइम का मिला के सब कुछ निकल रहा है एक साथ. सो आई वांट टू डेडिकेट दैट एल्बम टू दैट टाइम, to the time 90s, like to the 90s. But yeah, it's not going to be 90s, it's going to be hardcore rap and like trap music, but it's going to be around like the references and what I'm talking about, where I come from, my whole history, how I transition, where my family comes from, everything I want to talk about, and also create the art for it, create the visuals for it. So I think that's where the additional thing comes in. You can also use your graffiti art to express the rap music that you're creating. And we have to probably hire a illustrator or a guy, but I don't think तेरे को वो टेंशन है कि तेरे को एल्बम आर्ट बनाने का है, कुछ बनाने का वो टेंशन नहीं. तेरा गाने के लिए तू ही बना सकता है, and I don't think
a lot of rappers over there can Yeah. do it for Actually, themselves. internationally, there are a lot of people who do art and music. You know, like amazing amount of people who do like art and music together. So it wasn't something new that I'm doing. But like in India, definitely like as a rapper, I think not many people are like into visual arts as well. And but I think it's an expression that we also have uh, like shunned down. मतलब अपन ने उसको बढ़ावा नहीं दिया है, but he will करता है यार, come on, Yeah, you bro. know. So it's So he designed his own merchandise, his yeah, own he did clothing a and tattoo everything. and all respect, like big respect for him. He always shows me like whatever he has, made and stuff. Yeah, like even though that. he's like doing good in the rap, he didn't stop his doodle art. Exactly, and he's doing good in that also. Like I really respect and like I really like it's a different style, but he still does it, and he designed his own tattoo and stuff. So I think that's just an add-on to your whatever personality, and it's also an expression. So अभी 10 साल मैंने वो किया है बराबर, तो अभी ग्राफिटी इज बिकम नेचुरल फॉर मी. तो अभी मैं रैप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं हमेशा लाइक रोज़ कुछ ना कुछ लिख रहा हो या कुछ ना कुछ कर रहा हो या देख रहा हो, बट इट ऑल्सो गिव्स मी सो मच इंस्पिरेशन टू ड्रॉ मैन, लाइक किसी रैपर का कुछ देख लिया मैंने और उसमें मेरे को कुछ दिख गया, तो मैं वो बना रहा हूँ, मैं उसका ड्राइंग कर रहा हूँ. सो इट्स बेसिकली जस्ट लाइक सप्लाई लाइक फूड चेन है, समझ रहा है, वो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, यू नो व्हाट आई मीन. So bro, speaking about your art, your graffiti art that you have been doing, there is some piece of work that I want to talk about. The first one would be the IIT Bombay. They all did with Wicked Bros and all these Enemy and all these guys. बहुत बड़ा वॉल था. मैंने छोटा वॉल में तुम लोग का आर्ट देखा है. मेरे को लगता है that was the first time I got to witness your art on a big scale. Yeah. That was a very huge one. You had come there? Luckily it was a IIT event. I couldn't get an entry, but I saw the whole making video and everyone. I think there were a couple of people from abroad also who were like putting a helping hand on it. Yeah, no, there was one guy from Brazil only who had come here, and so I took him and for the project, and along with Moose, Enemy, and Lobster. But share the experience, bro. Like, see, IIT Bombay is a very renowned college, and you guys painting a huge wall over there is like a very huge thing for us as a spectator. Because you all have been doing, we have been seeing, तुम लोग का स्ट्रगल देख लिया, और जब भी अपने भाई लोग को अपन देख रहे कि इतना बड़ा जगह पे मचा रहा है, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग एट ऑल. और ऐसा भी नहीं है कि इट वॉज सम छोटा मोटा आर्ट था. इट वॉज अ वेरी इंट्रिकेट, बहुत डिटेल आर्ट था, जिधर तुम लोग ने क्रेन्स यूज़ किया ये वो पेंट करने के लिए. तो मतलब बहुत मेरे को तो वो देख के बहुत अच्छा लगा. और रात को जब भी वो लाइट्स में देख रहा था वो चीज़, तो और भी बहुत खतरनाक दिख रहा था. तो मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू मेक ऑल द होल आर्ट एंड एवरीथिंग? It took like 3 days for us to like finish that whole wall. This was something 200 feet, I guess, 200 by 40 feet or some I don't remember. But it was mad because the planning took time for us, क्योंकि सब अलग अलग आर्टिस्ट है, सब अलग अलग. But we decided a basic theme. I think it was space expedition. Space expedition. So then we decided a basic theme and like put. So I chose to put like alien. We just did an alien versus predator thing, you know. So I did one alien kind of figure, and Moose did one alien kind of figure, and they did like something, you know, normal like. I think there was one human a kind spaceman kind of thing. Yeah, it's like a was also- spaceman, like an astronaut and stuff. So yeah, it's just like it's fun because high walls, like when you have to do big walls, you really don't know what you're painting because you can only see this much, part, and this much, say for example, is the eye of a person, So like
it's like gonna be like a fucking big ass wall, and you're doing like just one part of it, you know. So it's like you don't know what the fuck is gonna happen. Yeah. And until you come back, until you climb down the ladder, come back. And then you get a So view. it's a full workout session, bro. Like when I paint, it's a full workout session. Like you come back because you have to climb up and down constantly, and they have like scafs. They don't have everywhere. There's not CD because if it's very high, then we have only scaffolding, you know. So I have to climb, come back. You know, it's a मैं पब्लिक का तो A4 साइज में पेज में पेंटिंग करने के लिए पड़ जाती है बट वही है ना दो देख जो रहे इम्पैक्ट 200 है फीट का ये Yeah. दीवार है तो मतलब it was a very big it's thing. yeah, it's a fun thing, yeah. I want to talk about the next piece. Is one of my favorites too. It's the Tony Montana Make It Snow. Ah. I'm a big fan It's of a Tony Montana. personal So yeah, it's a personal project for a friends for some friends actually in a building, like they're my really good friends. Shout out to Ralston, Aaron and all these guys, you know, Alistair. So basically like we were just out of lockdown or something around that time, you know, and yeah, we wanted to make it snow, so like so the next day we planned it and executed, and it's a fun scene in the street, right? So it's a very fun scene, and I really love Scarface the movie, and same vibes here, bro. yeah. And also talking about the Tony Sebastian aka Yeah, Tony exactly, Psycho yeah. Graffiti in That's where it MLC. comes from. Yeah, bro. मैं तो नहीं था तभी. मेरे को जब भी मालूम पड़ा कि मेरा ग्राफिटी हो रहा है, मैं तो शॉक हो गया था ब्रो. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने साल से हिप हॉप कर रहा हूँ, कोई मेरा ग्राफिटी बनाने वाला मेरे बिल्डिंग में. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. और एंड व्हेन यू मेड इट एंड आई वाज रियली ऑनर्ड कि जेक ने मेरा ग्राफिटी बनाया, वन ऑफ द ग्राफिटी पायनियर, एंड लाइक दिस इज रियली I was like bro, like मतलब किसका बनाने का ये एरिया में तो एक ही है बोला कि रिस्पेक्ट टू दैट. तो मैंने ऐसे ही बना मतलब yeah, like I love your like style also, you know, your aesthetic and all, and you know like you always had like you're always a good friend, bro, so you know, like a brother to me. So then I was like, okay, you know, I have to make. Bro, this is one gift I will never forget, just like our meet for the first time. Yeah, correct. And from there to here, so it was very great for me, and it literally put my parents into tears because they saw me. Yeah, that is, see, that's why I say like it's a blessing, man. It's more than, you know, it's a blessing. My dad passed away recently, but when he was there, he really loved that. Yeah. He would always say, "Why did you have to make that in the building? You could have made it outside the house." So he was because he was also an artist. He used to write posters and everything. And when he saw your art with you are doing spray can से जो art कर रहा है, मेरा dad तो shock हो गया था. And he was like literally that ये बंदे का art खतरनाक है, and he's going places. That were the words of my dad. I really remember your father coming up to me and, you know, saying कि बहुत अच्छा बनाया है, and you know, yeah, so like. Yeah, man. So the next piece I'm gonna talk about is the NFTs. Ice Cube, Tupac, Snoop Dogg, Biggie, Nas. I remember मैं आया था जब भी तू बना रहा था, अपन एंटी सोशल में थे, तू उधर अंडरग्राउंड में बना रहा था. Yes. And I was like literally gonna click a picture and post it, but I didn't post it because you said it's for an NFT, so I never posted it out. But I still have those pictures. And एकदम रियल लग रहे भाई. ऐसा लग रहा था कि कोई कैली विली से आके बनाया है, और अपने को मतलब प्राउड फीलिंग होता है जब भी मुंबई का बंदा कर रहा है ये चीज़, और अपना ही दोस्त कर रहा है, और अपना ही फेवरेट आर्टिस्ट का कर रहा है, टूपाक का कर रहा है, स्नूप डॉग का कर रहा है, और वो मतलब मैं भूल ही नहीं सकता हूँ. So how did that work out, bro, in the NFTs? It didn't work out. Unfortunately, it wasn't that of a great scene. But like, I was trying because also after that crypto crashed, and like I'm an artist. It was more about the person I collaborated with who was doing the NFT part of it. So it was like it didn't really work out, but it was a fun project, like, you know. So you know, some things don't work out, that's okay, you know, like
but like I kept doing what I do, and I really love those portraits, you know, because they came out really amazing, and it also pushed my reach. So I take it as a Instagram marketing campaign of sorts, you know, just because I made like really good reels out of it, and you know, and but those NFTs are there, so if anybody is interested, they can go. It's on the Polygon marketplace, and it's on OpenSea as well, and you know, anybody can just go and check for. It's called the Regulators, you know, the whole collection. So you can type the Regulators Zake and you know, get it off, because Zake's gonna be big. So that NFT is gonna be big. NFT कर रहे हो तो जाओ चेकआउट करो और फटफट ले लो, क्योंकि भाई एक बार बिक गया तो नहीं मिलेगा वापस. Yes, bhai, and it's like the original photo. Like there's no other picture, or there is no other like document of that particular. Basically, मेरा concept ये था कि if I do a wall and I whitewash it off, like, because if I black it out, it doesn't exist, but the photo of it exists, and the photo becomes everything. Like, you know, it becomes an expensive. I remember you told me कि जो भी बनाया वो सब एक ही सेम वॉल में बनाया है. एक बना के उसको फिर मिटा के उसके ऊपर दूसरा बनाया है, और like तो वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता. एग्जैक्टली, दैट पीस ऑफ आर्ट इज सो रेयर that the photo is the only thing, the document that I uploaded is the only thing that you can buy, and it'll be like the only piece that you have, you know. So everybody can go and still buy that. It's up, the collection is once up again there. पब्लिक, अगर तुम लोग NFT में है तो जाके चेकआउट करो अपना ज़ेक का आर्टवर्क. खतरनाक आर्टवर्क है, एंड डोंट मिस ऑन दैट. विद दैट आई वांट टू मूव टू अ नेक्स्ट प्रोजेक्ट यू डिड फॉर रेड बुल स्पॉटलाइट. मैं रेड बुल स्पॉटलाइट में था और मैं जैसे ही सेट में घुसता हूँ मैं बोलता हूँ ये ज़ेक का काम है, और मेरे को मालूम पड़ता है तूने एक आध 2 दिन में उड़ाया पूरा काम. हाँ, मैंने 2 दिन में किया था. कम से कम almost it was it was, big that as was 40 feet by 20 feet or something, and that was a big one, and I did it alone. Like that, I had no helpers. I had one guy, I think, and but like really that big. Yeah, I did all by myself, bro. I couldn't believe when the team came and spoke to me. उन लोग, मैंने तो बोल दिया था भाई ये Zake No, you know what happened, like when I reached there, और प्रोडक्शन वाली टीम लोग खड़े थे, समझ रहा है, और मैं उधर पहुंचे लाओ, ठीक है, और अभी इन लोगों को पता नहीं मैं कौन हूँ, ठीक है. मैं ऐसे ही जाके ऐसे ही बैठा उधर, क्योंकि द गाय आई वाज सपोज्ड टू स्पीक टू वाज़न्ट देयर. तो इन लोग बात कर रहे, अबे ये टीम किधर है, इन लोग का ग्राफिटी वाला, उन लोग आया नहीं. एंड देन आई वाज लाइक ये मैं ही हूँ. सो इट्स लाइक बट आपका टीम? मैं बोला टीम नहीं, मैं ही हूँ, अकेला ही हूँ. सो दे वर लाइक fuck, we are fucked, you know. But like on the second day they were like shocked. Everybody's like mouth was open, like ki fuck, how did you pull this, how did you do it, you know. And but that's what I think, you know, painting in the streets often, and painting illegally also has made me into a very fast artist, you know. I can just pull off anything, even your portrait, like I think it was done pretty much quick. मेरे को पब्लिक बोल रहा था 10-15 मिनट तोड़ा है, इतने टाइम पे मैं आके बना दिया. एंड मेरे को तो शॉक होता हूँ ब्रो, अभी भी वो पोर्ट्रेट मैं देखता हूँ ना, लाइक इट्स वेरी सैड दैट सम पीपल हैव उसके ऊपर थोड़ा मार्किंग कर दिया, बट मैं अभी तक उसको हटाया नहीं. मेरे को वो मार्किंग नहीं दिखता है, मेरे को उसके पीछे का आर्ट ही दिखता है. और उसके ऊपर जो हेड दिखता है ना मेरे को, जो उन लोग ने पेंट मारा है, इट एनकरेजेस मी टू डू मोर बेटर. एग्जैक्टली. मेरे को पता है मेरा ही एरिया है, लेकिन मेरे को ये भी पता है मेरे एरिया में हेट. बट वही तो बात है ना ये इन लोग हेट तो कर सकते हैं, पर इन लोग तेरे सामने नहीं आ सकते ना, उसलिए तो पीछे से सामने आके मुंह थोड़ी काला कर सकते हैं. उन लोग और अपन ऐसे ही छोड़ देंगे. उसके लिए उन लोग भी ऐसा है कि जब भी अपना नजर हटा तो उन लोग को दोगुना घटा, वो वाला सीन है. अपन जब भी नहीं है उधर वो शॉर्ट करके चल दिए, क्योंकि इन लोग कभी अपने सामने बात नहीं करने वाले, ना सामने अपने कुछ करने वाले. खाली जो भी है इन लोग अपने एब्सेंस में ही कर सकते हैं. और ब्रो मतलब सबको मतलब एक बात बोलना है कि मतलब फड़े पीस भी है, मतलब समझ रहे हैं, सब लोग पीसफुली आते हैं. अगर इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, यू नो, लाइक हम लोग सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट स्किल्स के वजह से करते हैं, फॉलोवर्स और ये सब चीज़ें की वजह से नहीं करते, यू नो. लाइक वी डोंट गिव अ फक अबाउट
people talk about you on social media, you know, that's because we have been from times there where social media was nothing, you know? Nothing, bro. Yeah, बता इन लोगों यार. समझो यार, पब्लिक बहुत पुराने खिलाड़ी है. But like talking about this respect kind of thing, Yeah. I saw your recent graffiti that you dedicated to MC Thoughtful, Yeah. and that was really touching for Yeah. every one of us because we miss him to the core, Yeah. and we still remember Yeah. his presence, his music that he gave us, and he before going. So, Yeah. what was that emotion making that graffiti? Because it was I had no something power different. actually. When he passed away, I had no power to do anything, like, you know. So Bro, we all were like, in a shock. Yeah, we all were in a shock and everything. I could just wish that this was a lie. Yeah, seriously. And after a point also, like when I was like, I want to see his face. If I don't see that, I don't know. So I'm not listening. I'm just like, fuck that shit. I want to go like see his face, you know. And then whatever happened, and obviously it was, but like it stayed for like a week. I was like really, you know, like feeling what the fuck, man, you know, just everybody was like literally crying, like, you know, ki kya, because, and also because we were like a part of one like management. मेरे को लगता है for the first time अपना जो मुंबई हिप हॉप कम्युनिटी है, उसमें से कोई जो कोर मेंबर है वो कम्युनिटी का सीरियसली चले गया है, और वैसा कभी अपन ने एक्सपीरियंस किया नहीं, ना सोचा रहेगा. और इतना अच्छा बंदा ब्रो, मतलब, you know, and he was a humble good guy, he was good like, with everyone, exactly, you know, किसी के लपड़े झगड़े में in नहीं fact जाता like था. the last day he was painting graffiti with my friends, you know, on the street, and they came and told me कि before going to the camp, like we were painting. So I was like, man, that guy also, like, उसने क्या नहीं किया है बा, मतलब उसने सब कुछ किया है, तो huge respect. So I had to do it, but like I took that time because I was also full of emotion and I didn't want to, you know. So but then when I thought ki chalo, now it's a good time, okay, let's do it, I went and I did it. And I remember that day also was like super hot in the morning. The moment I started doing it, bro, there were like clouds. I was like, fuck, that's a fucking blessing, you know. It's like some shit that you think, should I believe or not, but it's like, oh my god, that day was so good, you know, for me to paint, that it just felt like this is not, you know, somehow. Bro, I on behalf of all the MC Thoughtfuls, for the AC fans and all his followers, I would like to really appreciate you for making that artwork and still putting him out on the streets, you know. It feels like he's still there, his music is still there. Yeah. We still miss him, but he's still there with us He's forever. definitely, he's definitely there, bro. And to move on with, I think, your recent work that you did for Industry Galat, MC Altaf, Samoed, GG. Yes. I think that was also a crazy artwork that you did over there in Bandra. Yeah. And also in the hood. Yeah. So talk to me about that, bro. How was the experience? Yo. Like now you're starting making a lot of portraits of rappers and all these artists. So how does it feel for you? I mean, I've been switching. I'm you know, I'm like illustrating also. I made. You also did a Seedhe Marples. Yeah, I did the portraits, of course, but like I also did Marples, this and that, right? So, but like, because I I know how to, So I have to just cut you down there. The first Marples Dopadelics album, Marples album art was done by Zake, and it was. And even the logo. Even the logo, man. The Dopadelics logo is like done by me. Yeah, Dopadelics logo is done by Zake. क्योंकि मेरे को honestly Zake, मेरे को कोई logo designer नहीं चाहिए था. मेरे को कोई ऐसा आर्टवर्क बनाने वाला नहीं चाहिए था. मेरे को वही बंदा चाहिए जो हिप हॉप जानता है, वही बंदा चाहिए जो हम लोग को जानता है. सही बात. तो वही हम लोग के बारे में बता सकता है कि भाई हम लोग का वाइब ये है. अगर मैं किसी को लाऊंगा और जिसको पता नहीं हिप हॉप क्या है, किसको पता नहीं डोपाडेलिक्स कौन है, खाली उसको इज जस्ट गेटिंग अ गिग, इज गेटिंग पेड, उसके लिए मैं बना के दूंगा. मेरे को वो चीज़ करने का नहीं था.
एंड मैं तो अपना बॉयज़ को बोला कि भाई जेक ही चाहिए, जेक ही डिज़ाइन करेगा, जेक को लेके आओ, बस वही है। तो वही सीन था। या मेरे तो मतलब ऐसा हो गया कि तुम लोग जब भी बोले उसके पहले से मेरे को पता था कि तुम लोग का लोगो क्या होना चाहिए। that is the connect। हाँ मतलब किसी को भी मिलके पता चलता ना पहले कि मतलब मैं तो वैसे ही देखता हूँ कि तेरा पर्सनालिटी क्या और तेरा लोगो फिर कैसा होना चाहिए और यू नो व्हाट काइंड ऑफ आर्ट विल सूट। और तो मतलब द मोमेंट इट केम टू मी आई वाज वेरी एक्साइटेड आल्सो, सो आई मेड दैट एंड you know I pushed you guys also कि नहीं ऐसे ही करते हैं whatever, and I made 2 designs of that thing also, like the album art and stuff like that। ब्रो वो जो डोपडेलिक्स लोगो अपन जो बनाए थे उसका जो टी-शर्ट्स बनाया था, it got sold out। Really? It got sold out, bro। Wow, that's mad। Whenever I post a picture with भाई मेरे पास ही नहीं है टी-शर्ट। मेरे पास ही नहीं है बोला भाई मेरे पास भी जो है पब्लिक वो यूज किए भी लेके चल दिए है। मेरे पास कुछ एक टी शर्ट बाकी है अभी, मेरे को लगता है मेरे पास कुछ 2-3 टी शर्ट था। हाँ। उसमें भी मैं यूज किया टी शर्ट पब्लिक लेके चल दिया। हाँ मेरा भी ऐसे ही हुआ एक्चुअली। मेरा एक जो था जो दोपहर लिखा था वो पफ प्रिंट वाला, राइट? यस वो वाला तो चल दिया। अभी भी पब्लिक पे जब भी डालता हूँ ये टी शर्ट तो बहुत पब्लिक मैसेज करती है। इनफैक्ट वो टैंक टॉप भी था उसमें, राइट? स्टिल ऑन या स्टिल सेल में है क्या, मैं वेयर कैन आई बाय दिस, ये वो अभी भी मैसेज करता है। मैं बोला this is like was a limited, so we should drop man like stock. Fucking full ass you know I called you recently, yeah call me man, call shit, me bro. Do the merch, so that's a surprise। We are not talking about that in our podcast, that is, but something is coming soon once again। Dopedelics X Zake, something special is coming soon। yes, yeah to move on with, what is your future project, what is coming out next? Is it something like you told you're going to Indonesia to rep India? Yeah, that's on 23rd May and like after a long time I'm traveling internationally because lockdown of course, और उसके पहले मैं गया था तो it's a big like thing for me, you know, as an artist to meet other artists from all around the world who are representing their country and whatever, you know, like meeting with them and like painting with them, traveling with them and stuff. Yeah, but that's more of a like a journey, you know. It's more of a, it's not like it's a personal project of sorts. Like my personal project I think would be the EP that I'm talking about. That is the main, like that is that, like, and I don't think too much about the future in a way that कि मतलब 5 साल बाद मेरे को क्या करना है types, you know, because you might land up anywhere, man. Art is so big, you know, like I think I've found the way that like this way only. I never thought about कि मैं 5 साल बाद क्या करूँगा, you know. I did what is there in my hand like right now and you know just kept continuing and I appreciate every like second of my life, man. Even if like times are tough sometimes, you know, just I'm just like fuck this shit, you know, just listen to some good music, smoke some good and just like chill. Yeah, like chill, man, you know. And yeah, rest, like blessings are there, bro. We just wish you more success in whatever you do. Yeah. I pray you go to more places, more countries and represent India, represent yourself and like spread your art. And not only your art, even in terms of your music, I want more people to listen to your music and Thank more you, people man. to groove to it and like reach out to more places, like even represent India in terms of rap in other countries, you know what I'm saying? Correct. So that is the as a well-wisher, that is what I want for you. And so moving on to the next segment is the segment you've been waiting for. It's gonna be a rapid fire round. Yeah, टोनी के मैंने भारी पूछा भाई वो क्या कर रहे थे तुम लोग? थोड़ा क्या है, पब्लिक को थोड़ा engagement भी चाहिए, थोड़ा पब्लिक को they want to know the inside out and what is your perspective towards something. So सही है let's go, let's start. Yeah. Okay, to start with, I ask everyone about this. Mumbai or Delhi? Mumbai. Okay. Old school or new school? Old school. Okay. Yeah. Graffiti or rap? Graffiti. Okay. Yeah.
Okay, as you told graffiti, is it Robo or Banksy? Robo. Okay, okay. Wild style or stencils? Wild style. Mm-hmm. Montana cans or flame cans? Montana again. Yeah, yeah. So, Nikes or Adidas? Nike's on my feet, make my cipher complete. Yeah, yeah, that's right. Streetwear or luxury brands? Streetwear are street clothes that people can't afford, so I don't know. Yeah, bro. Yeah, Now, like streetwear is also like a streetwear is expensive street thing. people that streetwear is something that street people can't afford at these days. It's like what do you call? If you ask me, I maybe like Linking Road or Yeah, yeah, bro. the That's store. Linking Road or the store. okay. Mac and cheese or misal pav? I never had mac and cheese, bro. Yeah. And then I Misal think pav, it's misal bhai. pav, the Mumbai Yeah, shit. You know what I'm yes, saying? sir. Okay, so where do you think is the real fun in doing graffiti or in rapping? Both. चल भाई एक का तो both बोल सकता हूँ ना both. Both. Okay, Yeah. but still, what do you think is you want like? me to elaborate like? Yeah, yeah. अच्छा तो it's See, both is an expression, like Ah, art of expression. yeah. I think while doing my rap thing, I'm very like not lost. I'm more angrier, and while doing my art, I'm more like lost. It's like, it's like just a zone I need to be in. Because I don't look at the world. I'm more like removing it on paper and then looking at the world. I'm like, oh shit, everybody's here, okay. And like when I'm rapping, it's more like you interact with everybody, So two different ideas that I'm fighting inside myself, but at the same time having that's why I said it completes me, because when I stop at one, I begin the other. It's like that. That's well said, bro. Yeah. You should keep on going. You should keep on Yeah. moving and Yeah. make that move. Yeah. Yeah. So, what is the advice you want to give to the upcoming graffiti artists? Like, the struggle, your time struggle was different. Yeah. अभी जो लोग आ रहे हैं उन लोग का भी struggle different रहेगा. Yeah. Obviously, it's a new generation. Yeah. So, what is the piece of advice you want to give to the new artists who are emerging right now? I've said this before also, and I would say that freedom is really important, and anybody says anything like say fuck you, I'm gonna do what I want to do, and nobody should say anything to you, because it's your art and you get to decide. So fuck everybody and just go out and do it. Don't think that somebody is gonna come and save you, or you just need to go out and experience it. You just need to go and do it, because everybody asks me the same question, that how do I start? It's like nobody will teach you how to start. Like still there's YouTube, I would say. There's so much knowledge on YouTube. People still don't go on YouTube. They ask me because they want to know how I started. So I'm telling you right now, how I started is I went out there and started it, and didn't give a fuck about what others will think, and just that hunger to make it the best. That made me improve. So starting is just like 1%. It's an important thing, but it's just 1% of the whole thing that you see, as an art. So be free. So yeah, bro, that's well said for all the new graffiti artists coming out. Keep up the hunger and go do it. Don't wait for none. Don't wait for anybody, man. We really appreciate you, Zake, for taking your time out from your busy schedule. Yeah. And we wish you good luck for your Indonesia trip. Thank you, man. Thank And you. Respect it. I hope you go kill it. Yeah, I Make the will best piece definitely, out man. over there. Definitely, bro. And we also
wish you good luck in all the endeavors you're doing. Thank you, And thank with that, we come to an end of this podcast. Yes. Ladies and gentlemen, this is your boy Tony Sebastian, aka Tony Psycho. If you want to go check out Zake's art, go check out his art on YouTube, on Instagram, and also in NFTs. And also check out his music that's coming out on YouTube and Spotify and all these Music, places. yeah. Go stream it. Yes. Go stream it. Let's go make some cream Go for blast us. it, man. Yeah. So that's it. And this is your boy Tony Sebastian, aka Tony Psycho, signing off. And this is Offstage Podcast. Make sure you subscribe to the channel for more action. Yeah. Peace out. Signing off. Brr.